Good morning, students. Myself, Ashish Rana, PGT Biology, JNV, Devas. So, students, what are cells? Yes, cells are the structural and functional unit of life. Now, how many type of organism we have on the basis of cells? Yes, we have two type of organisms: unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular organisms are made up of single cell and multicellular organisms are made up of many cells. Now, multicellular organism having how many cells? Yeah, does they have same type of cells or different type of cells? Yes, they have different type of cells. So, in multicellular organism which having different type of cells, the utility of these cell is that these cells are specialized to perform different type of functions. Now, what is the organization of multicellular organisms? Multicellular organisms are made up of cells, then cells make tissue, tissue make organs, and organs make organ system, and then individuals. Now, what are tissues? So today we are going to discuss about the tissues. So tissues are the group of cells which are similar in origin and perform a particular function. So tissue are the group of cells which are similar in origin and they organize to perform a particular function. They are also having same structures. Examples of tissue: in case of plants we have xylem and phloem which conduct water and minerals. In case of animals we have muscles. Muscles contracts which result in the movements. So these are the examples of tissue. Now, does plant and animals having same type of tissues or they having different type of tissues? Plant and animals having different type of tissues. We don't have same type of tissues in plant as well as in animals. Why it is there? Why we have different type of tissues in plant and different type of tissues in animals? This is because the mode of life of plant is different and mode of life of animal is different. So mode of life animal की अलग होती है, plant की अलग होती है. That's why we have different type of tissues in plants and animals. So what is the mode of life and what is the difference between plant and animal tissue? So do you know plant, they don't move. They are stationary. They are fixed. They don't move, so they require less energy. Because movement it required more energy. While animals, they move from one place to another place. Now animals move from one place to another place, so they require more energy as compared to plants. Since plant does not move, so they require that type of tissue which can provide them structural support as well as strength. While animals can move from one place to another place, that's why they required that type of tissue which support movement. Another thing, so since plants are stationary, they require strength. So they have dead tissues. Most of the tissues in plants are dead because dead tissue can provide more mechanical strength and required less maintenance. While animals are moving, so they require living cells. So they can move and perform several functions. For example, this plant is stationary, it will not move, so it requires tissue which is providing structural strength. Animals, they move. Why they move? For the searching of food, shelter as well as mate. So they require living tissues. Another difference, only certain part of plants they shows growth. Mean growth in plant is not uniform. It is confined only to certain regions. कुछ ही रीजन होते हैं जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होती है. एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है. एनिमल्स के अंदर पूरी ही क्या है, ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है. सर्टेन रीजन में ग्रोथ नहीं होती है. ऐसा नहीं होगा एनिमल्स के अंदर की एक उंगली ज्यादा बढ़ रही है, एक उंगली कम होगी, दोनों हाथ की उंगलियां बराबर बढ़ेंगी. The structure of plant tissue is not very specialized. They have very simple structure. प्लांट टिश्यू का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, जबकि एनिमल्स का अंदर जो होता है वो बड़ा स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है.
क्योंकि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्लांट टिश्यूज. So plant tissues have plant having mainly two type of tissues, meristematic and permanent tissue. Meristematic tissues are those tissue which can divide, which keep on dividing and adding new cells. Permanent tissues are those tissue which does not divide. They does not divide. Meristematic tissues are further of three types on the basis of their locations where they are present: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. While permanent tissue are of two types: simple, which having only one type of cell, example parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and protective tissues. Complex tissues, these are those tissue which are made up of many cells, and examples are xylem and phloem. First of all, we will start with the meristematic tissue. It is also known as meristem. So I have already told you that this is a tissue which having the capacity to divide. It divide and add new cells. What are the characteristic feature of meristematic cells? These cells having dense cytoplasm and a prominent nucleus, thin cell wall. They lack vacuole. They lack vacuole to prevent quick cell division too, because this vacuole will prevent quick cell division. What is the role of vacuole? It provide rigidity to the cell. So if vacuole is there in the meristematic tissue, it will prevent their quick division. So these tissues, they lack vacuole. They are very active cells because they are dividing cells. So meristematic tissue, it increase the length and width of the plant. So we have three type of meristematic tissue. I have told you apical meristem. These apical meristems are present on the tip of shoot and root. These are present on the tip of root and stem. Now second is intercalary meristem. These meristems are present at the base of leaf or on the internode. Lateral meristems, these are present at the lateral sides. These are present at the lateral sides. Now what are their functions? Apical meristem increase the length of the root and stem. Intercalary meristem, it also increase the length of internode or leaf. Lateral meristem, they increase the diameter, girth of the stem or root where they are present. Permanent tissues. So permanent tissues are the tissue which arise from meristematic tissue. From where they arise? They arise from the meristematic tissue. How? How they arise from the meristematic tissue? Now when meristematic tissue, it loses the ability to divide, it undergoes certain changes. It undergoes change in its shape, size and function. This process by which a meristematic tissue develop into a permanent tissue is called differentiation. It's called differentiation. So by the process of differentiation, meristematic tissue give rise to permanent tissue. Now permanent tissues are of two type, already told you: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue having only one type of cell. These simple permanent tissues are of three type. Parenchyma. First is parenchyma. It is very basic type of tissue and it act as packaging tissue. Mean it packages the species in the plant. Plant के अंदर जो space होते हैं उसको क्या करता है? ये पैक करता है. ये relatively unspecialized cells होते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि these cells having a large intercellular species. So here intercellular species are large. So this particular tissue having large intercellular species and it act as a packaging tissue. Now parenchyma. When parenchyma contain chlorophyll, then it performs photosynthesis. And this parenchyma performing photosynthesis is known as chlorenchyma. Actually, what is there in the chlorenchyma? There is a lot of chloroplast. Chloroplast बहुत ज़्यादा होता है parenchyma में, photosynthesis करेगा और chlorenchyma बना देगा. Chlorenchyma कहाँ पे होगा? Leaves के अंदर होगा. एक्वेटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो पैरेन्काइमा रहता है, आप देख सकते हैं ये पैरेन्काइमा और ये बीच में क्या है? ये स्पेसीज है. इसके अंदर
क्या होता है, गैस भरी हुई होती है, एयर भरी हुई होती है। तो एक्वाटिक प्लांट के अंदर जो पैरेन्काइमा होता है उसके अंदर लार्ज स्पेसीज रहते हैं जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। इससे एक्वाटिक प्लांट को तैरने में हेल्प मिलती है। इस टिश्यू को हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। कोलनकाइमा, सेकंड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज कोलनकाइमा। कोलनकाइमा के अंदर लिविंग सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा में भी लिविंग सेल्स थी, लेकिन यहाँ पे जो थिकनिंग होगी, जो रेडिश पोर्शन है, थिकनिंग जो होगी वो कहाँ पे होगी, कॉर्नर्स के ऊपर होगी। दिस पर्टिकुलर कोलनकाइमा हैविंग थिक सेल वॉल एट द कॉर्नर्स, सेल के बीच में स्पेस लेस होता है और इसका काम क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट पार्ट को, चाहे वो लीफ हो गया चाहे वो स्टेम हो गया। तो लीफ का जो स्टॉक रहता है उसके एपिडर्मिस के नीचे, लीफ के स्टॉक के एपिडर्मिस के नीचे कोलनकाइमा प्रेजेंट होता है और ये कोलनकाइमा क्या करता है, लीफ को बेंड करने में हेल्प करता है, इजी बेंडिंग करेगा विदाउट ब्रेकिंग। जब बहुत तेज विंड चलती है तो लीव्स जो होते हैं वो फ्लटर करते हैं, टूटते नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलनकाइमा। Sclerenchyma. It consists of long cells. These cells are narrow and dead cells. These cells having thick cell wall. And that thick cell wall is made up of lignin. This lignin it acts as a cementing material. Intercellular species are absent, and this particular Sclerenchyma it provide rigidity to the plant, where it is present in vascular bundles, in leaf veins, and it form the hard covering of seed in the husk of coconut and nuts. You might have seen coconut. The husk of the coconut is made up of Sclerenchyma. This Sclerenchyma it provides strength, and those plant part which contain Sclerenchyma can be used for making ropes. For example, we can have ropes from coconut or fibers. Epidermis, it is the protective tissue which protect the plant, whether it is leaf, whether it is stem, fruit or root, it protect the plant. It is the protective layering, outermost layering of the plant part. It mostly consists of single layer of cells. It only consists of single layer of cells. These cells are flat cells and does not have intercellular spaces. इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है ताकि कोई भी पैथोजन जो है उन सेल के बीच के स्पेस से एंटर प्लांट पार्ट के अंदर नहीं कर सके, इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। बाहर की जो बाल होती है, जो आउटर बाल होती है एपिडर्मिस की, जो एनवायरनमेंट को फेस करती है वो थिक होती है एज कंपेयर टू द इनर वॉल्स। जो एरियल पार्ट्स होते हैं, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, लीफ स्टेम हो गया, उनके अंदर क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस होता है इसके बाहर एक थिक लेयर वैक्सी सब्सटेंस की डिपॉजिट होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल जो है वो एक वैक्सी लेयर होती है जो एरियल पार्ट जो प्लांट का होता है, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, उसके ऊपर क्या होती है, ये डिपॉजिट होती है। इस क्यूटिकल का काम क्या होता है, ये पानी के लिए इम्पर्मिएबल होती है, सो इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट इंजुरी एज वेल एज इट prevent the pathogen of the invasion या पैथोजेनिक फंगस या invasion of the pathogen को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। एपिडर्मिस कंटिन्यू, प्लांट जो होते हैं जो ड्राई हैबिटेट के अंदर रहते हैं उनका जो एपिडर्मिस होता है वो बड़ा थिक होता है। जैसे कि जो डेजर्ट के अंदर प्लांट रहते हैं, कैक्टस रहते हैं, उनका जो एपिडर्मिस होगा वो बड़ा थिक होगा और उसके ऊपर जो होता है वो थिक लेयर होती है क्यूटिन की, उसके ऊपर बहुत थिक लेयर होती है क्यूटिन की। अगेन क्यों, क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उनको वाटर का शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, पानी का इवेपोरेशन ना हो ट्रांसपिरेशन के द्वारा या लेस हो, इसीलिए उनके अंदर जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है। इसी तरह से जो रूट्स होते हैं, रूट्स के अंदर जो एपिडर्मिस होती है ये लॉन्ग इलोंगेशन बनाती है, इट गेट इलोंगेटेड एंड फॉर्म रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एक और प्रोडक्टिव लेयर होती है कॉर्क।
जैसे ही प्लांट ओल्ड होता है, रूट स्टेम ओल्ड होगा, तो क्या होगा, प्लांट का जो एपिडर्मिस होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस प्लांट एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टम. व्हाट इज मेरिस्टम? डिवाइडिंग टिश्यू. Main this meristem it will divide. This meristem it will divide and add new cells. Outside, inside. The cell which are outside, they form cork. They form cork. These cells which are forming corks, these cork is a multilayer having thick cell wall. Thick है, cell walls are thick due to deposition of suberin. Suberin is a chemical substance. उसकी डेपोजिशन के कारण सेल वॉल बड़ी थिक हो जाती हैं. कॉर्क जो है इट कंटेन डेड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड मेड अप ऑफ सुपेरिन्स. स्टोमेटा, these are also present on the epidermis. These are the pore through which gaseous exchange take place as well as transpiration take place. Now these are the stomata. These are the pore which are guarded by two guard cells. These guard cells they regulate the opening and closing of the stomata. Stomata open होगा या close होगा, pore open होगा या close होगा, ये guard cell के द्वारा regulate किया जाता है. Complex permanent tissue. So this complex permanent tissue is the tissue which is made up of more than one type of cells. We have two type of complex permanent tissue. One is xylem and one is phloem. So both these tissue they together form the vascular bundles. So these tissue they conduct water and food. See, this vascular tissue is responsible for the survival of the terrestrial plants. First, xylem. It is made up of four elements, yeah, cells: tracheids, vessel, xylem fibers and xylem parenchyma. Except xylem parenchyma, all other cells are dead. All other cells are dead. It provide mechanical support to the plant. पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड को स्टोर करता है. जाइलम का पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करेगा और साइड वाइज कंडक्शन करेगा. साइड वाइज कंडक्शन करेगा पानी का. ट्रैकीड और वेसल जो होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और पानी को कंडक्ट करते हैं, मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं वर्टिकली फ्रॉम रूट टू द लीफ. फ्लोएम. अगेन इट इज मेड अप ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल्स: शेप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. Except phloem fiber, all other are living cells. Now, what is one thing is very interesting in phloem. Sheet tube जो cells होते हैं उनमें nucleus नहीं होता है, but still they are living cells. They does not have nucleus, but they are living cells. उनका जो function होता है, it is controlled by the companion cells. Companion cells जो होती हैं, ये क्या करते हैं, उनके function को control करते हैं. Sheet tube main cell होते हैं जहां से food का ट्रांसलोकेशन होता है, फूड का ट्रांसफर होता है. फ्लोएम के अंदर जो फूड का ट्रांसफर होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा. लीफ से रूट, रूट से ग्रोइंग पार्ट की तरफ होता है. जाइलम के अंदर केवल एक ही डायरेक्शन में जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड about the meristematic tissue, which its feature is it keeps on dividing. Then we have studied different type of permanent tissue, simple and complex. Then we have studied about the xylem and phloem. Xylem and phloem, they are made up of many type of cells. Now we have studied about the productive tissue, that is the epidermis and cork. Then we have also studied about the stomata and what is its role. Thank you.